We're getting you all details from the Prime Minister's much talked about visit to his home state of Gujarat. Amit Shah, the Union Home Minister, is also with him. The Prime Minister is there for a day. The Home Minister is going to be spending 2 days in Gujarat. Saurav Akhtania is in Ahmedabad getting us more on that story. Saurav, first of all, take us to the details of what the Prime Minister's day today in Gujarat looks like. So, Sneha, Prime Minister Narendra Modi has reached the Rajkot airport, and afterwards he's straight headed to the KDP hospital. Now, this is the hospital which has been built by the Patel Seva Samaj, built at the cost of 40 crores. Let me tell you that all sorts of high-end facilities, equipments and the machines are available in this particular hospital. It took a lot of time to build this particular hospital, and it's a very important place. This is the Rajkot area, the small town in the Rajkot district. Again, it is a very highly Patel-dominated area, very important vote bank for the Gujarat Assembly election. Remember, this is the third visit of Prime Minister Narendra Modi in the state of Gujarat. It's the hometown of Prime Minister Narendra Modi. Earlier, he had meetings at the public rallies and several others inauguration done at the tribal belt area. Tribal belt again is a very important belt for the Gujarat Assembly election. After which now he has reached the Patel-dominated area, the Patidar community area. This is the Saurashtra, a very important place in the state of Gujarat. The BJP had lost a lot of seats in the 2017 election, which the BJP wants to regain all those seats, and therefore Prime Minister Narendra Modi himself on the field in this particular area. Now, what and why the Patidar votes are important? 60 to 65 seats. First, Saurashtra. Saurashtra has the highest seats of around 30 to 35 seats. Later on, the North Gujarat and then the South Gujarat. Okay. These are the particular areas where there is lot of dominance of the Patidar community. And after this particular event, Sneha, he is going to address a huge public meeting. Around 3 lakhs people will be present in this. Yes, it also is being seen as an outreach to the Patidars in the state of Gujarat, who've actually been a little disappointed with the BJP, as was evident in the 2017 assembly elections. The BJP hopes to retain the votes of this crucial community there. Saurav, thanking you for the moment. We'll come back to you for more on that in just a bit from now. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami led government on Friday announced a drafting committee to implement the Uniform Civil Code in the state. In this notification, Dhami-led government has said the panel is going to examine and report on all relevant laws governing the individual civil affairs of all citizens residing in Uttarakhand. Back on the 2nd of May, Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur had also announced that UCC will be brought into the state soon. Meanwhile, opposition has called Uniform Civil Code an unconstitutional and anti-minorities move, calling this rhetoric and diversion from concerns of inflation and a weakened economy. जस्टिस रंजना देसाई के अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी हमने गठित कर दी है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हमने पहले ही कहा था कि हम इस पर हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था। चुनाव के बाद पहली जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, पहली शपथ ग्रहण के बाद हमने उसमें ये सर्वसम्मति से फैसला ले लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए समान नागरिक संहिता लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। आज हमने वो कमेटी बना दी है और कमेटी जल्दी ही ड्राफ्ट तैयार करेगी, और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद हम उसको लागू करेंगे। सरकार की नीयत बहुत साफ है, किसी को तंग और परेशान करने की नीयत नहीं है। जो ऐसी चीज़ें हैं जो देश के लिए खतरा है, प्रदेश के लिए तो है ही है, साथ में देश के लिए भी खतरा है, तो वो कैसे यहाँ पर बिना परमिशन के यहाँ आ रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, वो क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कॉमन सिविल कोड की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, जिसका सभी ने समर्थन किया है, पूरा प्रदेश साथ में है। ये जो इनके तर्कस में जितने सारे एजेंडा हैं
वो एजेंडाओं पर ही बहस चल रहा है। तो इसलिए यहाँ होड़ लगी हुई है कि कौन आगे बढ़ के कितना ज़्यादा लोगों को चुट्टी काटने वाला, कितना ज़्यादा लोगों को में तनाव पैदा करने वाला कार्यक्रम करता है। वही सबसे बड़ा सफल इनका मुख्यमंत्री है, वही सरकार है। यूनिफॉर्म में करना मैं समझता हूँ कि मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर राज्य सरकार की ये का प्रयास है तो ठीक है, वो उसका मसवदा तैयार करे और मसवदा को पेश करे और उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर चिंतन होना चाहिए। अगर ये इतना आसान होता यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ये कब का बन गया होता। ऐसे मामलों में जो सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, प्रमुख उनके जो लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर एक सर्वदलीय बैठक करके, सर्व समुदाय की बैठक करके और सबको साथ लेके, उनका सबकी सहमति लेके एक तभी कार्रवाई सब पूरी होनी चाहिए। Colleague Dilip Singh Rathore is getting us more details on that story, joining us from Uttarakhand right now. The statements had been made by the Chief Minister in the past, after which several BJP Chief Ministers had spoken about the need for a uniform civil code, but it does appear that Uttarakhand has put this into action mode right now when it comes to implementation of uniform civil code. Dilip. देखिए, शुरुआती दौर में अगर हम बात करें, जब इलेक्शन का टाइम था तो उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया था कि हम इसको उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। उसी समय से ये कहीं पर इसका स्वागत हुआ था, कहीं पर इसका विरोध हुआ था और आखिरकार कल पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें 5 लोगों को टीम बनाई है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे देखिए 2 क्षेत्र लगते हैं यहाँ पर, एक मैदानी क्षेत्र लगता है, एक पहाड़ी क्षेत्र लगता है। और जहाँ पर मैदानी क्षेत्र की हम बात करें तो अलग अलग सोसाइटी के लोग यहाँ रहते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म विशेष की बात करें, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इसमें विरोध के स्वर जरूर है। लेकिन हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लोग स्वागत भी कर रहे हैं इसका। जी बिल्कुल दिलीप, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिलीप, with those details on what next as far as the uniform civil code in the state of Uttarakhand is concerned. Meanwhile, suspense is growing over Gyanvapi survey report as the court is also to release the survey video on the 30th of May. Multiple pleas have been filed in court to not make the report public. The Moss panel has insisted, saying that this must not be publicized in public interest. The Hindu side, interestingly, has also said the same, saying that there should be a complete ban on making the video content of the survey public, and this is in the interest of national security and communal harmony. Meanwhile, the Hindu side's lawyer has made some shocking charges. The lawyer said that half an inch thick and 63 centimeters deep hole was made into the alleged shivling. The Muslim side says these are false claims. Sensational claim made by the lawyer for the Hindu petitioner in the Gyanvapi case in Varanasi. Advocate Vishnu Shankar Jain claimed that an attempt was made to tamper with the evidence in the Gyanvapi case at the mosque premises. मेरा क्लेम यह है कि जब ये उनकी पोजीशन में था, इसको एक फव्वारा बनाने की कोशिश की गई है और इसमें छेद किया गया है और वो चक्री जो इनकी पूरी थ्योरी है फाउंटेन की, वो वहाँ से उत्पन्न हो रही है। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो इन्होंने छेद किया है इसमें, ये इंटेंशनली किया है और इसको फव्वारा बताने की कोशिश की है, जो कि एकदम गलत है। The Hindu side has made a huge claim that an half-inch thick and 63 centimeters deep hole was made into the oval-shaped structure they describe as the shivling. एडवोकेट कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उसमें 63 सेंटीमीटर का छेद है और वो छेद जाहिर सी बात है हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि वो हमारे पोजीशन में नहीं था। पिछले 40-50 सालों से वो एरिया, अपर एरिया जो मस्जिद का है जहाँ पे शिवलिंग मिला है, वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जिसको वजू खाना बनाने की कोशिश की गई। The Hindu side also claims that an attempt was made to remove a disc-like object
from the basement of the Gyanvapi premises after the place was sealed on orders of the court, and that alert security personnel prevented the removal of the evidence in the form of a disc-shaped object similar to the shape that was found on top of the structure, being described as the holy shivling. कोरोबोरेटेड बाय गवाही जो वहाँ के केयर टेकर है, उनसे पूछा गया कि इसके ऊपर क्या रखा है आपने, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर फव्वारा चलता था जो 12 साल पहले चलता था, फिर बोला 20 साल पहले चलता था। और उसके बाद नेक्स्ट कोरोबोरेशन ये है कि अभी रिसेंटली वहाँ से कुछ लोग, एक चक्री थी जो स्टोर रूम में रखी हुई थी मस्जिद के, वहाँ से उसको ले जा रहे थे। जब सीआरपीएफ ने मना कर दिया तो उसको वापस अंदर रख दिया गया, क्योंकि वो रेड जोन है, ना उसमें कोई सामान ले जा सकता है ना ला सकता है। The Gyanvapi Masjid Intizamiya Committee, on the other hand, has disputed the claims of the structure being a shivling or an attempt being made to drill a hole in the structure. They insist there was no tampering with evidence either with the structure or at the premises, especially with the entire sealed off area now being in control of the Central Reserve Police Force. झूठ की भी कोई सीमा होती है। ऐसा झूठ बोलने और झूठ को बढ़ावा देने वालों के लिए हमारी गुजारिश है कि कम से कम सीमा के अंदर झूठ ही अगर बोलना है तो कम से कम सीमा के अंदर तो रहकर झूठ बोले। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिस दिन ये सब मामला सामने आया है उसी दिन से वो वज़ू खाना सील कर दिया गया, तो कौन जाकर छेड़छाड़ कर रहा है उससे? There are no details yet in public domain when the attempt was allegedly made to remove the evidence from the premises or to drill a hole in the structure being described as the shivling by the Hindu side. Advocate Vishnu Shankar Jain claims they will bring up the matter in court. With Samarth Srivastav and Kumar Abhishek in Varanasi, Bureau Report, India Today. This is a horrific assault caught on camera where a woman is being assaulted by a TRS leader. The 29-year-old woman was allegedly stabbed by her ex-boyfriend near Hafiz Baba Nagar in Hyderabad. The accused, Habib, attacked the woman with sharp-edged weapon. She was rushed to the hospital after being critically injured. The police have said the woman and the suspect were in a relationship but parted ways just recently. A woman in Hyderabad was attacked with a sharp-edged weapon allegedly by her ex-boyfriend, who happens to be a TRS leader. Moscow's invasion of Ukraine has entered its third month now. After failing to seize the capital of Kyiv, Russia is now trying to take full control of the eastern region from Donbas to Crimea. Here's more. The Russian invasion of Ukraine has entered its third month. But the offensive is focused on eastern Ukraine now. After failing the siege of the capital Kyiv, Russia is now trying to wrest full control of the eastern region from Donbas to Crimea. On Friday, multiple explosions were reported at an oil field in Donetsk from Russian strikes. This crucial supply road bombed into ashes. Thousands of troops have poured into the region from three sides in an attempt to encircle Ukrainian troops. In the northeast region, Kharkiv, Ukraine's second biggest city, continues to bear much of the Russian onslaught. Ukraine is fighting back. Tanks are rolling into the eastern region. Howitzers, FH-70 are also moving in. A Russian strategic base was destroyed in Ukrainian attacks. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has again urged Russian President Vladimir Putin to hold talks and end the war immediately. В цілому це до 12 мільйонів
Це велика кількість для держави, яка з 40 мільйонним населенням. 12 мільйонів людей виїхало, з них біля 5-5,5 вже виїхало за кордон нашої держави. А все, що за кордоном нашої держави, дуже допомагають люди, які приймають наших людей, приймають не як біженців. Тут я вдячний, що більшість країн Європейського Союзу приймають їх як навіть не як гостей, а як своїх людей, як рідних, як близьких. І я думаю, що без їх допомоги, без об'єднання Європейського Союзу навколо цих людей, навколо цієї гуманітарної кризи нам було би складно. While speculations are rife over Putin's help, the Russian leader has given no indication what his next move would be. Bureau Report, India Today. It brings us to the end of this edition. For all news and updates, do log on to our website, that's indiatoday.in. You can also download the India Today app. Thank you for watching.